platform. Today I will discuss World Development Report 2021. This report is really important. So in this video I will provide who published this report and what are the advantages and what are the content which are provided in this report. So if you like this video, like, share and subscribe this platform so that you can see the new update of this platform, and do check my description box where I am providing my other platform name and link. You can join that platform also, where I am providing the important content in the form of short videos, images, posts. So join that platform. So let's start the video. Please watch this video till end so that I can provide the whole information in a presentation form. And please comment on the comment box how you like this video, how the presentation, because this presentation required a lot of hard work. So do comment on the comment box. So let's start the video. So the World Development Report 2021. This report is released by World Bank. So this question is really important. In various government exam, it would be asked who released the World Development Report 2021. So its answer is World Bank. So this year the theme was data for better lives. So theme is also very important. Sometime in question they asked you what is the theme of World Development Report 2021 this year. So the theme is data for better lives, was released by World Bank. The World Development Report focuses on how data can improve the lives of poor people and advance development objectives to ensure no one is left behind. So the purpose and the focus of this report is to improve the life of poor people and advance development objective so that no one is left behind. So this content I also provide in the form of article which is available in my LinkedIn account. So in my description box I also mention my LinkedIn profile link, so you can join that platform where I am providing the different articles in a very unique and different way. So you can also join that platform and see the article. So in that article I shortly provide the information, but in this presentation I am providing the whole information. So if you want to see that, you can join my LinkedIn profile also. So do check on the description box. Okay, so move on to next slide. The World Development Report 2021 has quoted an expensive description of data provided by the UK National Data Strategy, as per which data means information about things, people, system. It includes personal data such as basic contact details and records generated through interaction with services or the web, or information about their physical characteristics. So the World Development Report 2021 has quoted that the expensive description. They talk about the expensive description of data which is provided by the UK National Data Strategy. As per they provide the information about the things, people, system, and it also include the personal data such as basic contact details and the record generated which interacted through or services or the web, or information about the physical characteristics of the people and their condition. Okay, move on to next slide. What is public intent data? So in this slide I am providing the public intent data information, the data collected with the intent of serving the public goods. So it is a type of data which is collected intent of serving public goods such as national survey, census, national accounts, household survey, enterprise surveys, labor force surveys, surveys of personal finance, administrative record. So these are the types of records which are mentioned in the public intent data. So it is a type of data which is collected intent of serving of public goods. So these are the some public goods which are provided or mentioned in the public intent data. Okay, move on to next slide. Through this report, World Bank aims to support its client countries by identifying where public and private sectors investment are the more critical, defining a rich program for policy reforms and technical assistance, and highlighting areas in which global initiatives can help to convene and facilitate cross-border cooperation. So this is very important. Means in this report, World Bank aim is to support
the client countries to identify where public and private sector investment means कहाँ पे public and private sector investment हो सकती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा most critical area है, defining rich program policies, reforms और technical assistance जो कि highlight करेगा उन area को global initiative लेने के लिए, ताकि convince कर सके, facilitate कर सके global cross border cooperation से भी, ताकि सबका cooperation हो तो इन society को, इन people को भी अच्छी life मिल सके. Okay, move on to next slide. How can data support development? So the data which are mentioned in this report, so how the data can support the development. So first point is the top pathway is data created and used by the civil society and academia to monitor and analyze the effects of government programs and policies, and by the individuals to empower and enable them to access public and commercial service tailored to their needs. So it is a top pathway, means it is a pathway, it is a way where data is created or used by the civil society or academy to monitor or analyze the effects of government programs or the policies. Means there are some government programs and policies which are analyzed by the society, civil society, and they try to focus on the individual to empower and enable them to access, ताकि उन लोगों को public and commercial services जो है वो मिल सके. Okay, move on to next point. The middle pathway is the data generated or received by the government, international organization to support program administration, service delivery and evidence based policy making. So जो मिडिल वे पाथ है उसमें डाटा जनरेट किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा किसके थ्रू, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो कि सपोर्ट करेगा इस प्रोग्राम को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए. मींस क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, नीड है, और सर्विस डिलीवर करेगा उन लोगों को जो कि हमारी जो पॉलिसी हमने बनाई है ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके. ओके, मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट. द बॉटम पाथवे इज डाटा जनरेटेड बाय प्राइवेट फार्म्स. सो जो बॉटम पाथवे है, जो मीन्स पहले फर्स्ट इनिशियल पाथवे के बारे में हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मिडिल पाथवे. नाउ द बॉटम पाथवे इज द डाटा जनरेटेड बाय प्राइवेट फार्म्स. तो जो बॉटम पाथवे है वो डाटा जनरेट करेगा प्राइवेट फार्म. This data can be a factor of production that fuels farms and economic growth. So in this data there is a factor of production that fuels farm and economic growth. It can also be a part of production processes and in other ways, and can be mobilized and repurposed to support development objectives. Okay, move on to next slide. This slide is very important because these are some key points which are related to World Development Report 2021, and this is very important for your any government exam. So World Development Report 2021 key points. First is new social contract for data. So here are some points which is mentioned in the new social contract for data. So first is the report noted that new rules are needed for data to realize its potential to transform lives, and for the same a social contract for data is needed. It means अभी कोई भी अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आते हैं और अगर हमारी कोई स्कीम हम गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, तो उसके कुछ सालों बाद या कुछ एक साल बाद ही मान लो आप कि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है उस स्कीम में कई बार, तो उसको चेंज करने से और भी ज़्यादा लोगों को उस चीज़ का, उस स्कीम का बेनिफिट होता है. सो रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि भाई न्यू रूल्स की बहुत ज़्यादा नीड है ताकि जो डाटा है उसको पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म किया जा सके जिनको नीड है इस चीज़ की. ठीक है. सेकेंड इज द रिपोर्ट नोटेड दैट द नीड ऑफ फॉर इमीडिएट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19 हैज टेस्टेड द सिस्टम इन प्लेस ऑफ प्रोटेक्टिंग डाटा. सो रिपोर्ट एक और चीज़ के बारे में बताती है कि देयर इज़ अ नीड फॉर इमीडिएट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन. मीन्स कोविड-19 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इमीडिएट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ताकि पता कर सके कितने लोगों को टेस्टेड हो चुका है, कितने लोगों को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट इज इट ऑल्सो हाईलाइटेड दैट लो इनकम कंट्रीज ऑल्सो नीडेड टू मेक देयर वॉइसेज हर्ड इन द ग्लोबल डिबेट ऑन डाटा गवर्नेंस. थर्ड पॉइंट इन दिस सब पॉइंट इज कि it also highlight low income countries, means the country which have low income they also need to make their voice heard, means उनकी voice भी सुननी चाहिए global debate on data governance में. ठीक है, उनके भी पॉइंट सुनने चाहिए, उनके भी जो भी इश्यूज हैं उनको भी नज़र में रखना चाहिए और उनकी भी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए. मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. Next sub point is increase data use and reuse. So its point are that report highlights the need to increase access to more users through open data sharing initiative and interoperability. Means
दिस रिपोर्ट हाईलाइट द नीड ऑफ इंक्रीज टू एक्सेस मोर यूजर्स, मीन्स इंक्रीज होना चाहिए एक्सेस यूजर्स का, ताकि ओपन डाटा रहे, शेयरिंग डाटा इनिशिएटिव रहे, ठीक है, और इट विल इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ डाटा फॉर पॉजिटिव डेवलपमेंट इम्पैक्ट। सो इंक्रीज करना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए डाटा का, ताकि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इम्पैक्ट हो सके। नेक्स्ट इज द रिपोर्ट नोटेड दैट रियलाइजिंग दिस इंक्रीज वैल्यू कॉल्स फॉर चेंजिंग बोथ माइंडसेट्स एंड फ्रेमवर्क गाइडिंग डाटा यूज। सो दिस रिपोर्ट ऑल्सो नोटिस दैट कि इंक्रीज वैल्यू कॉल्स इंक्रीज होनी चाहिए, ताकि उससे जो माइंडसेट है, फ्रेमवर्क है, वो भी चेंज हो सके और अच्छा हो सके। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। Third sub point is creating more equitable access to data benefits. So its points are: the World Development Report 2021 noted that there are major inequalities in the ability to produce, utilize and profit from data access both rich and poor countries and among the people within them. So the World Development Report 2021 noticed that there are major inequalities in the ability to produce or utilize. This is very true point that there are many inequalities in our society, in our state, in our country, in other part of the country, that inequality of ability to produce something or utilize something and take the benefit and the harmness of that thing or the anything else, profit from data, access from rich to poor. There is a major gap of rich and poor in the ability to produce or utilize something. So this point is very important. It noted that poor people tend to be excluded from the data system for public and private, and statistical capacity and data illiteracy remain limited in poor countries. So it is also noted that मीन्स कुछ स्कीम्स जो होती हैं वो पुअर लोगों के लिए बनाई जाती है, लेकिन उन्हीं को ही एक्सक्लूड किया जाता है, मीन्स उन्हीं को ही उस स्कीम में नहीं डाला जाता, तो जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। कई बार क्या होता है, कुछ स्कीम्स के बेनिफिट्स के लिए जो रिच होते हैं, जो कैपेबल हैं हर चीज़ के लिए, वो भी उस स्कीम में आ जाते हैं ताकि उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, और जो एक्चुअल में पुअर लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, वो उस बेनिफिट से रह जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। इफ़ यू आर कैपेबल to gain something or if you capable to earn good, so please ऐसी स्कीम्स या ऐसे जो बेनिफिट्स हैं जो कि स्पेशली पुअर लोगों के लिए बनाए गए हैं, तो उन चीज़ों में आप मत जाइए, ताकि जो कि पुअर लोग हैं, जिनके लिए स्पेशली वो स्कीम बनाई जा रही है, जिनके लिए वो सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, उनके पास वो सारे बेनिफिट्स आ सके, क्योंकि इन दिस वर्ल्ड एवरीवन हैज़ द राइट टू एक्सेस एवरीथिंग। नेचुरल थिंग्स आर सबके लिए है, कोई उसमें रिच नहीं है, पुअर नहीं है। जब भी नेचुरल डिजास्टर आता है, उसको नहीं पता कि कौन रिच है कौन पुअर है, वो सबके लिए या तो बेनिफिट होगा या फिर हार्मनेस होगा। सो इट्स बेटर इफ़ यू आर कैपेबल, सो डोंट जम्प ऑन अदर प्लेटफॉर्म और अनदर थाली और समथिंग। अगर किसी को नीड है, सो प्लीज़ उनको आगे कीजिए ताकि वो भी उस चीज़ का बेनिफिट उठा सके, ठीक है। द रिपोर्ट स्ट्रेस दैट एफर्ट्स टू इम्प्रूव द फेयरनेस ऑफ ग्लोबल डाटा सिस्टम नीडेड टू एड्रेस बोथ टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। तो डाटा जो है वो यही एफर्ट्स कर रहा है कि इम्प्रूव हो सके, फेयरनेस हो सके उन लोगों के साथ भी जो एक्चुअल में नीड है, ताकि इस इनइक्वालिटी को, रिच और पुअर की जो इनइक्वालिटी है उसको थोड़ा कम किया जा सके। ओके, move on to next point, that is fourth point, regulation of personal data to prevent misuse. This is very important. Now in today world there is a major misuse of data and privacy जो है वो बहुत ज़्यादा हार्म हो रही है लोगों की। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 नोटेड दैट द मोर डाटा इज रीयूज द ग्रेटर द रिस्क इज ऑफ बीइंग मिसयूज। सो दिस रिपोर्ट सेड दैट मोर डाटा इज रीयूज, अगर जितना ज़्यादा रीयूज होगा डाटा, द ग्रेटर द रिस्क ऑफ इट बीइंग मिसयूज, तो मिसयूज भी उतना ज़्यादा होगा। सो अगर कोई चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म का जितना ज़्यादा बेनिफिट है उसका उतना ही ज़्यादा ही नेगेटिव हम देख सकते हैं। आज के टाइम में इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, इतनी ज़्यादा नेगेटिव थिंग्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि अगर कोई एक पर्सन भी आपको कुछ एक चीज़ प्लेटफॉर्म पे कह देता है, या कुछ भी फोटोशॉप में भी आजकल काफ़ी हो रहा है कि लोग कुछ का कुछ बना देते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। सो काफ़ी ज़्यादा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए इन चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ताकि कोई भी आपकी प्राइवेसी का मिसयूज ना हो, ठीक है। इट सेड दैट द रिस्क इज एविडेंट इन ग्रोइंग कंसर्न अबाउट साइबर क्राइम। वही साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, उसका रिस्क होता जा रहा है। जितना ज़्यादा साइबर क्राइम होगा, कई बार तो लोग
सुसाइड भी कर लेते हैं। सो कई लोगों के लिए अपनी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो किसी चीज़ के लिए गलत नहीं सुन सकते हैं। सो ये जो अभी होते रहते हैं स्कैम वगैरह, सो बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट ऑल्सो कॉल्स फॉर अ ग्लोबल consensus to ensure that data are safeguarded as a global public good and as a resource to achieve equitable and sustainable development. So यही है इस रिपोर्ट में कि ग्लोबल कंसेंसस है कि भाई इंश्योर करना कि जो डाटा है वो सेफगार्ड मीन्स आज के टाइम में हमारे फ़ोन में हमारे इतनी सारी ऐप्स होती हैं जिससे कि हम पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो इट इज़ गुड कि आपको अपने पॉकेट में पैसे रखने नहीं पड़ते, आप डायरेक्टली किसी को अपने बैंक के थ्रू, अपने ऐप्स जो आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। बट आजकल साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कोई भी मैसेज आता है कि आपने इतने पैसे वन कर लिए हैं, आप बस इस पे लिंक पे अपने डिटेल्स सेंड कर दीजिए। सो दिस इज़ रॉन्ग। ऐसे स्कैम से बचिए। या फिर आपको अगर कोई कॉल आता है कि भाई आपके बैंक से कॉल आ रहा है, आपने ये नहीं किया, आप अपना ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, तो वो चीज़ भी बहुत रॉन्ग है। कभी भी अपनी कार्ड की किसी भी चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है किसी के साथ मत शेयर करो। और ये जो कॉल्स आते हैं वो फेक होते हैं, वो आपको डराते हैं और आप डर से ही अपनी जो आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं उस चीज़ को आप उनके साथ शेयर कर देते हो, जो कि बहुत गलत है। तो ऐसे स्कैम से बचिए। और अगर आपके जैसे बच्चे भी हैं और कोई और भी जो टीनेजर है या फिर जो और भी छोटा है जिसे नहीं पता है बट आज के टाइम में फ़ोन सबको यूज़ करना आता है, तो उन लोगों को भी बताइए कि ऐसे स्कैम होते हैं, ऐसे स्कैम से हमें बचना है। सो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा कंसर्न है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आए। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो मूव ऑन टू फिफ्थ पॉइंट, इंटीग्रेटेड नेशनल डाटा सिस्टम, दैट इज INDS. The report states that implementing a new social contract to reset the rules of a game of data governance called an integrated national data system that allows the flow of data among a wide array of users in a way that facilitates safe use and reuse of data. So data very important. So this report states that implementing new social contract to reset the rules of game. So in today's life there are so many games which offer you the prize money or the anything else like PUBG and all. So आप लोगों ने देखा ही होगा लॉकडाउन में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पबजी का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था। उससे पहले भी था, लेकिन आज में और भी सारी गेम्स हैं जो कि लोग खेलते हैं और उसमें मतलब अपने फिर आप अगर आप प्राइज़ ऑन करते हो तो आपको अपनी जो बैंक डिटेल्स है वो सब शेयर करनी पड़ती है। तो प्लीज़ इतनी जल्दी आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे गलत स्टेप्स मत उठाइए जिससे कि आपको बाद में उसका कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े। सो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिससे कि ये जो गेम्स वगैरह होती हैं उन पर थोड़ा गवर्नेंस किया जाए ताकि कोई स्कैम ना हो सके। ठीक है। इट फर्दर नोटेड दैट अचीविंग अ वेल फंक्शनिंग INDS, दैट इज इंटीग्रेटेड नेशनल डाटा सिस्टम, रिक्वायर प्रॉपर फाइनेंसिंग एंड इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस, प्रोटेक्ट एंड शेयर डाटा। सो अगर गवर्नेंस होगा, कुछ अगर चेंजेस होंगे या फिर कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगी तो उसमें प्रॉपर फाइनेंशियल भी नीड है। सो इट रिक्वायर्स फाइनेंसिंग एंड इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस, प्रोटेक्ट एंड शेयर डाटा। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, डार्क साइड ऑफ डाटा। सो डार्क साइड क्या है डाटा की? The report notes that there is often concentration of power, including both political and economic, in the hands of those with privileged access to large volume of data. So ये रिपोर्ट जो है वो एक और चीज़ नोटिस करती है कि there is a concentration of power. किस किस का पावर है? इंक्लूड करता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, जिसकी वजह से प्रिविलेज है कि लोग उन लोगों को कि वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। In the private sector, the market forces are largely to lead data accumulations and market concentration in data-driven business, preventing entry of small firms and creating conditions for abuse of market power. So, abusement भी हो सकती है market power की। ये सारी dark side of data की। ठीक है। Hence, measures that limit this kind of dominance on data control needed to be central to any data governance framework. So, measures यही है कि limit करना चाहिए this kind of dominance को, और किसके थ्रू? सेंट्रल टू एनी डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो। बहुत 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 हार्ड वर्क